एक मिनट, मदी कौन है This वैसे? meeting is being recorded. ओके, सो चले शुरू करते हैं। तो लेट्स सॉल्व मोर पास पेपर्स। पेपर 2 के सवाल ही देखते हैं। We have to select the past papers according to the content we have covered. तो काफी क्लोजली देखना पड़ेगा। Okay, I think this is according to our question. देखें, the reference is October-November 2015, paper 2-3, question 1. October-November 2015, paper 2-3, question 1. And we are covering section 1.1.1 and 1.2, including base units, prefixes, standard form, significant figures, ये तमाम चीजें, homogeneous equation, ये तमाम चीजें हम लोग cover कर रहे हैं. So the intensity of progressive wave, you'll be having progressive wave in the wave section, is defined as the average power per unit area. ठीक है, इंटेंसिटी को क्या बोल रहे हैं? Power upon area is basically intensity. Show that the SI base unit of intensity are this. चलो, तो intensity क्या है? Power upon area. What is power itself? Any idea? Work upon No. time. Time. और area है सीधा. What is work itself? F into D. Force into distance. Yes. Now we know. We know the base unit for force, GMS minus 2. We know the base unit for displacement, meter. We know the base unit of time, and we know the base unit of area. Let me see, man. So kg m square s minus 2 upon m square s. तो देखिए m square से m square cancel out हो गया. We are left with kg s minus 2, और ये वाला s जब ऊपर आएगा that will also be minus 1, and hence we are having kg s minus 3. Yes, Iman, you are right. Yes, Ayan. G. Cool. So this is how we have proved. And जब भी मैंने आपको बताया, if you have show that questions, तो जो आंसर है ना उससे what do we say, थोड़ा सा emphasize कर दिया करें, फोकस कर दिया करें उसके ऊपर थोड़ा, so that examiner do know कि क्या सिनेरियो चल रहा है. ये इसकी स्क्रीन को 1 मिनट रुका. ओके, सो आगे बढ़ता है. ये सवाल हमारा पहला कंप्लीट हो गया. नाउ the intensity of sound related to amplitude and equation हमें given है, और इक्वेशन में जो जो चीजें given है वो सारी हमें बताई जा रही हैं. Rho is the density, c is the speed of sound, f is the frequency, k is constant. Show that k has no unit. चले प्रूव करते हैं, कोई मसले की बात नहीं है.
तो हमें सबसे पहले क्या करना है, के का शो करना है कि के पास कोई भी यूनिट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक के एज सब्जेक्ट. कुछ इस तरह, आई अपॉन रो सी एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी ऑलरेडी नो द बेस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, kg s minus 3 over rho is density, kg m minus 3. C is speed, ms minus 1. F is frequency. What is the SI base unit of frequency? Formula क्या होता है frequency का? F equals to 1 over T. That means 1 over S. The base unit for frequency is second inverse. Square है, so that is square. And while X is the amplitude, amplitude has base unit meter. Square है, square लगा दें. ठीक है. First thing first, kg से kg cancel. Now s minus 3 over m minus 3. ये वाला m और ये वाला m प्लस 1 प्लस 2. एंड यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, s minus 1 ये वाला, एंड s minus 1 का होल स्क्वायर बिकम्स s minus 2. तो देखें what will happen, s minus 3 remains same, this becomes minus 3 plus 3, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. तो m has a power 0 and anything which has power 0 equals to 1, तो ये s minus 3, तो ये कैंसिल आउट हो गए. And anything which has power 0 equals to 1, hence we have proved that k does not have any unit. ठीक है. तो दोनों सवालात में हमारे पास शो दैट वाला मटेरियल था, डिस्कशन था. ठीक है. इफ यू आर सेंडिंग मैसेजेस, काइंडली सेंड मैसेज टू द डेडिकेटेड अकाउंट चैट हाइफन co-host. ठीक है. सर k की वैल्यू इज 1 which does not have any unit, Ashbar. That means we don't consider it as unit, so it has no unit. फिर एम्पलीट्यूड का ऐसा ही बेस यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है. मीटर है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ओ था या तो मैंने उसने स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया हुआ दिया. है. अच्छा, मदी सिंह, s minus 1 की पावर 2, s minus 1 की पावर 2 is s minus 2. ठीक है. जो कि मैंने यहाँ पे किया है, s minus 1 की पावर 2 is s minus 2, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी. सही है. ओके. अब यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा है, बट बिफोर दैट let me know if you have any confusion or problem related to this question by writing in the chat box, by opening your microphone, or by giving me a thumbs up. Okay, man. What about the others? Okay, Ifra. Okay, Amatul. ठीक है, Ishbar. So those who are not interacting in the class, kindly do, because this is good for me and for you as well. ठीक है. ऑनलाइन क्लास में जितनी इंटरेक्शन होगी उतनी हमारे लिए बेहतर है, बिकॉज somehow we are missing that physical human connection in the physical class. So that is why I put more energy in the online classes. ये सेटअप के जितने भी शशके हैं वो इसीलिए डालता हूँ, so that हमारा एक ह्यूमन कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट लेवल पे बिल्डअप हो सके. कूल. चलो आगे बढ़ते. कैलकुलेट इंटेंसिटी इन पिको वॉट पर मीटर स्क्वायर. पिको क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा था, पिको इज 10 की पावर -12. ठीक है. ऑफ अ साउंड वेव. वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ के डेंसिटी
SI बेस यूनिट में यानी kgm-3, T SI बेस यूनिट में, F SI बेस यूनिट में, x नॉट नैनोमीटर में. What is nano? Nano is 10 raised to the power -9. ठीक है. अब what we are about to do, we want to find out intensity. The formula for intensity is K rho C half square x naught square. So we'll be using this formula to calculate intensity. चलो देखते हैं. So K is 20, rho is 1.2. We don't have to worry about because the SI base units are being used. Rho की वैल्यू 1.2 लिख दी है. C is 330. F is 260. Square है तो we have put the value of square, and x is 0.24. Nano is -9. स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए. ठीक है. तो by the calculation, if I show you how will you do this, 20 multiply by 1.2 multiply by 330 multiply by 260 square multiplied by 0.24 exponent -9 square. So what we got? We got the value of 3.08 into 10 raised to the power -11. ठीक है. But he wanted answer in pico watt per meter square. So pico is 10 to the power -12. What I said, if I press ENG, so our answer will become like this. Okay. So it will be 30.8 exponent -12 watt m-2. Okay. But I also told you always write your answer in two significant figures. अगर एग्जामिनर आपसे खुद नहीं बोला है, like you should write your answer in three significant figures. By default, you should write your answer in two significant figures. In that way, it will become 31 exponent -12 watt m-2. And 31 ऐसे ही रहेगा. Exponent -12 becomes pico watt m-2. So we have found our answer, 31. Okay. This is how we did this question. Yeah, Efra. Answer is good to go, but दो ही चीजें हैं जो मैंने एंड में आपको समझाई. पहली चीज that convert it into exponent -12 so that we can break it down into pico and two significant figures. How can we convert decimal placing using calculator? Let me show you, Madhi. If you look at this, तो अगर आपने एक्सपोनेंट -12 को -11 बनाना है या -9 बनाना है, यानी इफ यू वांट टू मेक द पावर लेसर इन नेगेटिव, तो शिफ्ट ENG. ठीक है. अगर आपने नेगेटिव में और पावर को और मजीद छोटा करना है, सिंपल पुट ENG. ये देखो कन्वर्ट हो रहा है. शिफ्ट ENG दबाऊंगा तो पावर बड़ी होगी. ठीक है. Cool. So this is one of the questions we did in today's class. If you can see the same question, if it is being asked in paper 1, that will be asked maximum against 1 mark. Good to know that we have paper 2. Paper 2 में हमारे पास जो सवाल होता है वो 3 मार्क का आता है. So that is why paper 2 is थोड़ा सा मेहरबान on us. Okay, let's move ahead. Let me see some more questions. Okay.
Let me tell you the reference. It's October-November 2015 P21. Question 1. State 2 SI base units other than mass, SI base quantity, sorry. Other than mass, length, time. I told you 5. Yes, Amatul, one of them is temperature and the other is current. Yes, Efra. Time and temperature. Iman, time already पूछा है, temperature is correct. Yes, current. So, current, or you can write electric current. And similarly, you can also write temperature or thermodynamic temperature. ठीक है, इस तरह. Cool. A beam is clamped at one end. An object X is attached to the other end of the beam. Cool. As shown in figure 1.1. ठीक है, तो बीम का एक एंड यहाँ पर फिक्स किया हुआ है और अदर एंड पे ऑब्जेक्ट एक्स रखा गया है. एंड दैट ऑब्जेक्ट एक्स इज बेसिकली oscillating. Object X is made to oscillate vertically. The time period is given by this equation. ठीक है, m is the mass, l is the length, e is the Young's modulus, k is the constant. SI base unit of Young modulus k हमें प्रूव करना है कि वो ये होता है. ठीक है, तो वैसे तो यंग मॉडुलस हमें चैप्टर 6 में पढ़ना है, बट इफ आई टेल यू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग मॉडुलस is FL over AE. F is force, L is length, A is cross-sectional area, E is extension. kg, ms minus 2 for force, m for length, m square for cross-sectional area, and m for extension. These two cancels out. So kg m power 1. When it moves in the numerator, it becomes minus 2. So this is same power head and s minus 2. So it becomes kg m minus 1 s minus 2. ठीक है, so maybe against 1 mark or 2 mark it is being 1 mark. ठीक है, cool. आगे बढ़ते हैं. Determine the SI base unit of K. K के SI base unit निकालेंगे. So we have equation as T equals to K under root ML cube over E. ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? We have to get rid of this root. We denote Young modulus yes by capital E. So taking a square on both sides so that we can get rid of under root. If you are new to the class and you want to get registered, this is the message. You can send message to WhatsApp to say Salman Ashmi. He'll be responsible for letting you in the class as being registered one. Cool. Chalo. So T square equals to K square, and जब इस पूरे के पूरे अंडर रूट को स्क्वायर मिला, रूट गॉट वेनिश्ड. ठीक है, वी नीड के को सब्जेक्ट बनाए. A square will be equal to T square E over ML cube.
ठीक है। नाउ के स्क्वायर, अब मैं बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टाइम का बेस यूनिट सेकेंड है। यंग मॉडुलस यूजीएम माइनस वन एस माइनस टू। मैथ्स, मैथ्स है ना एम, यस। मैथ्स का बेस यूनिट केजी और लेंथ का बेस यूनिट एम क्यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, केजी से केजी कैंसिल्ड आउट। ठीक है। नाउ एस स्क्वायर एम माइनस वन एस माइनस टू ओवर एम क्यू। तो देखें, एस स्क्वायर और एस माइनस टू, व्हाट विल हैपन, दे विल ऐड अप। तो होगा क्या, एस की पावर माइनस टू प्लस टू विल बिकम एस की पावर जीरो एंड बिकम्स वन, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी आर लेफ्ट विद एम माइनस वन एंड ऊपर आएगा ये माइनस थ्री। ठीक है। तो इट विल बिकम एम माइनस फोर। तो के स्क्वायर इक्वल टू एम माइनस फोर। अगर मैं दोनों तरफ पावर हाफ कंसीडर कर लूं तो क्या होगा बेटा, टू एंड हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी जस्ट के एंड टू वन दार टू दार, इट विल बी माइनस टू। So the unit or the SI base unit is m minus 2. ठीक है। अच्छा सवाल था। कूल। Cool, sir. ठीक। हम्म। तो ये एक सवाल हमारा और हो गया। ये सवाल आगे भी जा रहा है, बट इस सवाल का जो आगे का पार्ट है दैट बिलोंग्स टू सेक्शन 1.3 विच इज अनसर्टेनिटीज, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। एंड Sir, आज की क्लास में जितने पास पेपर्स हो रहे हैं उतने करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस बेटा। ये किस साल का पास पेपर है? That is basically October November 2015 P21 question 1. All right, thank you. Welcome. Cool. चले आगे बढ़ते हैं। If you have not purchased past papers, I am recommending you one of the past papers I normally recommend to my students, and these past papers are read and write publications. बहुत सारे रीजन हैं मुझे इनको रिकमेंड करने के, मेरे इनको रिकमेंड करने के, और इकोनॉमिकल है। ठीक है। और ज़्यादा पास पेपर्स कम पैसों में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा इफ यू look at the quality of the paper, it's good. The area in which you have to write down your answer is sufficient, just like the space is provided in CAI examinations. And this is why इस साल जो मैंने ए लेवल्स की वर्कबुक बनाई है, मैं कभी भी ए लेवल्स में पास पेपर नहीं डालता हूँ वर्कबुक में, बिकॉज इफ आई put the past papers inside the workbook, the printing cost will be so much high. So workbook की जो डिटेल्स हैं वो सर मुस्तकीम को आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कि लेट यू नो। एक ही वर्कबुक है, छोटी सी वर्कबुक है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर होगा, ऑल दी 11 चैप्टर्स। बट वर्क पास्ट पेपर्स के लिए रीड एंड राइट के 9702 के P1 and P2 के टॉपिकल पास्ट पेपर्स you have to purchase by any nearby book store. तो जितनी जल्दी पास पेपर आ जाएं आपके पास उतना अच्छा है, बिकॉज हम पास पेपर्स तो बहुत करेंगे। मैंने बताया ना, अगर 8 महीने का सिलेबस है, 4 महीने तो पास पेपर्स में जाते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, one more question, and let me give you the reference. October, May, June 2015 P23.
कूल। सर ये बुक वाली बात, मुझे यही लग रहा था, स्क्रीन शेयर में हमारे पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। ओके सर, पहली दफा ए लेवल फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और आते साथ आपने पास पेपर शुरू करवा दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट आए हो ना? तो वीडियोस आर अवेलेबल, द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, तो उनको गो थ्रू करो। कहीं पे कोई मसला हो, सेंड मी अ मैसेज, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है? अच्छा सर अब सर, तो ये बुक वाली बात वापस बता दूं? ओके। एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न, जो मैं चैप्टर में आपको थ्योरी करवाता हूँ, तो वर्कबुक हमारी ऑल द 11 चैप्टर्स को कवर कर रही है। ठीक है? तो इफ यू वांट दैट वर्कबुक, आप सर मुस्तकीम से इसकी डिटेल्स कर पूछ लिएगा। सर मुस्तकीम इज बेसिकली माय मैनेजर, जो तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा फॉर द पास्ट पेपर्स, रीड एंड राइट पब्लिकेशन के पास्ट पेपर्स आपने लेने हैं टॉपिकल, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 फिजिक्स 9702 के लिए। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दैम ऑनलाइन बाय देयर वेबसाइट। रीड एंड राइट पब्लिकेशन में आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे डिलीवर कर देते हैं, और मेरा इसमें कोई कट नहीं है। इनका काम बस अच्छा है, पास पेपर की क्वालिटी अच्छी है, इकोनॉमिकल है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। तो ये चीज है। चल आगे बढ़ते। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज दिस। स्टेट द डिस्टेंस इन गीगामीटर। So 1.5 into 10 raised to the power 11. Again, I'll use the help of calculator. 1.5 exponent 11. अब देखें, मुझे पावर छोटी करनी है, व्हाट डू आई डू? पावर छोटी करनी है, सॉरी, ईएनजी का बटन दबा दिया, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट 9 आ रहा है 150, and giga is basically exponent 9. It will become exponent 9 हो गया गीगा मीटर, ऐसे रहा। गीगा मीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वी जस्ट हैव टू राइट 150। दैट इज हाउ वी मेक श्योर कि हमारे पास गीगा मीटर में आंसर आ जाए। यस आयान, इट्स 150। कूल। सही है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सैटेलाइट above the equator is this. Okay, I think we need a diagram to understand it better. And luckily, in A levels we cover ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके अंदर बड़ी प्यारी सी डायग्राम बनी हुई है ऑलरेडी। तो इफ यू लुक एट दिस, क्या बात हो रही है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट इज दिस, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट। कितना है? 42.3 मेगामीटर। ठीक है? टाइम 0.24, चलो देखते हैं अभी। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस। अच्छा, अब एक काम करें, कन्वर्ट ऑल ऑफ दैम इनटू एसआई यूनिट। 42.3 मेगा क्या होता है? एक्सपोनेंट 6 मीटर। सिमिलरली 6380 किलो क्या होता है? एक्सपोनेंट 3 मीटर। ठीक है? A microwave signal is sent from a point on the earth directly below the satellite. Okay.
माइक्रोवेव सिग्नल भेजा गया है इस तरह, डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द माइक्रोवेव सिग्नल टू ट्रैवल बैक टू द सैटेलाइट। तो बेटा एक टाइम जा रहा है यूं, जब सिग्नल जा रहा है इस तरह, और वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बैक टू द सैटेलाइट, यानी इट्स अ राउंड ट्रिप लाइक दिस। तो हम जो भी टाइम निकालेंगे उस टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो वी डू नो द डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली दे आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव, वी डू नो द स्पीड। तमाम मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 42.3 एक्सपोनेंट 6, नहीं एक मिनट, माइनस करेंगे इनको, क्योंकि 42.6 तो ये डिस्टेंस है और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास ये है, तो दोनों को माइनस करेंगे। एक मिनट रुको, पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो हमने क्या किया, 42.3 एक्सपोनेंट 6 में से माइनस किया 6380 एक्सपोनेंट 3। दैट इज हाउ वी गॉट टू नो द डिस्टेंस। चलें देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि हम के क्यों माइनस कर रहे हैं, यू कैन आस्क। सर हम माइनस क्यों कर रहे हैं? दैट वाज क्विक। अभी बताता हूँ बेटा, ये देखें, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी आर गिवन दिस डिस्टेंस एंड वी आर गिवन दिस डिस्टेंस, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, सही है। सही सही सर। तो हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। So 42.3 exponent 6 minus 6380 exponent 3, it will become 35.92 exponent 6. ठीक है। अब we do know distance 35.92 exponent 6 divided by speed क्या है 3 exponent 8। तो 0.1197 टाइम लग रहा है। तो ये जो टाइम आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, बिकॉज हमें राउंड ट्रिप का टाइम चाहिए। तो इट विल बी 0.239। क्या बात है आया। एंड वी सर ऑलवेज वो हैव टू, कुछ कह रहे हो? दरअसल मदी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था बस, अच्छा, नोट्स के लिए जी। ओके। सो वी हैव टू लीव आवर आंसर टू two significant figures. That is how it will become 0.24. And we don't have to write down the unit in A levels. They are already given. This is how आपका ये calculation complete होगा, ठीक है। Once again, I'm telling you, keep your working as crystal clear as possible. एक तो हमारा मजहब हमें सिखाता है सफाई ईमान है। दूसरा, जितना आपका वर्क क्लियर होगा एग्जामिनर उतना बेहतर तरीके से आपके काम को समझ पाएगा। रिमेंबर दैट यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद एग्जामिनर बाय मींस ऑफ दिस पेपर, ठीक है। तो हैव योर कन्वर्सेशन एज क्लियर एज पॉसिबल। कूल, चलें आगे बढ़ते हैं। Speed of sound wave through a gas of density rho and pressure P is given by, where C is a constant. Show that C has no unit. Once again, first thing is we have to get rid of
अंडर रूट, ठीक है। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट पी पी अपॉन रो, taking square on both sides just to get rid of root. So v square equals to cp upon rho. We have to focus on c, make it subject, v square rho upon p. Now c equals to v is speed, ms minus 1 whole square, because speed is given with a square. Rho is density, kgm minus 3 over p is pressure, pressure का बेस यूनिट kgm minus 1 s minus 2. अगर याद नहीं है तो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया में ब्रेक डाउन कर लिएगा, एक स्टेप बढ़ा लिएगा, देन यू कैन सॉल्व एज वी आर सॉल्विंग। अंडरस्टूड? सो आगे देखते हैं। If you provide square to square meter, it's meter square s minus 2 kg m minus 3 over kg m minus 1 s minus 2. तो जो कट रहा है उसे कट करें, सॉरी, kg से kg, s minus 2 से s minus 2, ठीक है। Now what we are left with, m square minus 3 and m minus 1. So it will become m minus 1 over m minus 1. They will also cancel out 1. And 1 means no limit. Okay? That is how we have to C does not have any limit. ठीक है सर, ये सब ही कट जाएगा जी। C equals to 1 exactly. Okay. अंडरलाइन ऑल द स्केलर। अभी हम लोगों ने स्केलर वेक्टर्स पढ़े नहीं है, लेकिन आपको ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट होगा, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। अंडरलाइन बोल रहे हैं तो वी हैव टू अंडरलाइन, वी डोंट हैव टू सर्कल, वी डोंट हैव टू हाईलाइट, वी हैव टू अंडरलाइन। तो इन दिस केस स्केलर क्वांटिटीज को अंडरलाइन करना है। तो एक्सेलरेशन इज नॉट स्केलर, एनर्जी इज स्केलर, मोमेंटम इज नॉट, पावर इज, वेट इज नॉट। तो जो पावर वेट, अमतुल वेट नहीं है, वेट वेक्टर है, क्योंकि वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स हैज डायरेक्शन। वेट की डायरेक्शन एग्जैक्टली डाउनवर्ड होती है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। यस, इट्स पावर एंड एनर्जी। कूल। तो ये हमारा एक सवाल और हो गया। नाउ लेट मी टेल यू, यू नो व्हाट, आज मैंने कितनी क्लासेस ली हैं? लेट मी शो यू माय लाइफ, मेरी जिंदगी। एंड एक मैसेज देना चाहूंगा, टीचिंग इज वन ऑफ द पैशंस आई हैव, अदर वन इज कुकिंग। अगर आप लोग, आज मैंने आप लोगों से शेयर किया था, संडे को मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो कि कराची में थे, उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। तो अगर आप लोग आते तो आप मेरे हाथ का मजेदार और लजीज खाना खा पाते, बट आप लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। खैर, सर ये थोड़ी ना तो सही बात हुई। मैं जब आऊंगा ना तो तुम्हें खिलाऊंगा, परेशान ना हो। तो भाई ये थी आज हमारी जिंदगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वीं क्लास। माय गॉड। बट इफ यू लुक एट मी, एनर्जी लेवल वही है, जस्ट बिकॉज आई एम फॉलोइंग माय पैशन, and I want you all to follow your passion as well, the thing which makes you happy, the thing which ignites you। ठीक है? जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो थकन, थकावट, बोरियत doesn't matter a lot।
ठीक है, you just follow your heart by heart and soul. ये सीन है भाई. सर यो ब्रो. आप प्रेफरेबली कितने साल के पास पेपर प्रेफर करेंगे पेपर 2 के लिए? बट 2016 तक कर लूं आपके साथ, पेपर ऑफ 2 के कोर्स, लिए लाइक देखो हम करते ही हैं जी कि मेरी कोशिश होती है एज मच पास पेपर एज पॉसिबल करें, लेकिन अगर मैं जी। बात करूं अलोंग विद वेरिएंट्स तो 3 साल के इनफ होता है. 3 साल का इनफ होता है, सही है। अलोंग विद यही पूछना वेरिएंट्स. था, सिर्फ यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके, वेलकम. तो लेट्स मूव अहेड और थोड़े से और पास पेपर सॉल्व करते हैं. ओके, ये सवाल इज फ्रॉम मई जून 2015 P22. तो whichever question is coming in front of me, मैं उससे बाइफिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये देख रहा हूं कि 1.1 1.2 में वो लाई कर रहा है कि नहीं, एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग. सो up till now you must have had the idea that it's not rocket science to solve past papers. You just have to read the question clearly and write down the answer. Simple as that. Use the definition of work to show that SI base units of energy are kgm square s minus 2. Easy peasy. कैसे? Work equals to F into D. अब यही सवाल पेपर 1 में पूछा होता, 1 मार्क के अगेंस्ट होता. kg m स्क्वायर s माइनस 2, सॉरी m s माइनस 2, और d के लिए m. इसी से पावर ऐड, तो kg m स्क्वायर s माइनस 2. बस इस चीज के 2 मार्क्स हैं. दैट इज व्हाई आई लाइक पेपर 2 मोर देन पेपर 1. डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस. वैसे तो हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा, बट इफ यू रिमेंबर ओ लेवल्स के लेक्चर्स, डू यू रिमेंबर व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ. व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज? voltage is the other name of potential difference. Yes, Ashbar, but I'm talking about definition. What do you know about voltage or potential difference? Okay. अभी मैंने आपके जूनियर्स ओ लेवल्स वालों को ही ये डिस्कशन कर रहा था, तो सामने ही दिखाता हूँ. सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज. Yeah, work done per unit charge required to drive a charge through a single component. Okay, this is the perfect CI level definition of potential difference or voltage. Or energy per unit charge. Yes, it's work done per unit charge, it's energy per unit charge. So work done, or you can say energy per unit charge, which drives a charge through a single component. इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में इसकी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे. Yes, Iman, we can also include the energy conversions, but from electrical to non-electrical, ये जो है हमारे पास non-electrical to electrical की condition होती है, that is for EMF. ठीक है? You can also include the energy conversion, but since I see the question being asked again one mark, तो इसलिए मैंने ये condition include नहीं की. Determine the SI base unit of resistance. Okay, show your working. तो बेटा हमें अपनी वर्किंग प्रॉपर शो करनी है. इफ आई सेइंग कि gm स्क्वायर s माइनस 3 a माइनस 2, लेट अस सी. तो 3 मार्क्स हैं. एक एक स्टेप
क्लियर करके दिखाना है। तो रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट। सिमिलरली वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और करंट ऐसे ही रहा। वर्क इज एफ इंटू डी, चार्ज करंट इंटू टाइम और करंट ऐसे ही रहा। नाउ दैट्स इनफ। तो अब जरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फोर्स के लिए केजी एम एस माइनस टू, डिस्टेंस के लिए मीटर, करंट के लिए एम्पेयर, एम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पेयर। तो केजी एम स्क्वायर एस माइनस टू और नीचे क्या बचा, ए स्क्वायर एस। नथिंग गोज इन द डिनोमिनेटर। ओके, एक और जवाब आया है के जी एम स्क्वायर एस माइनस वन ए माइनस टू। तो के जी एम स्क्वायर जब ये ऊपर आएगा तो एस माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एस माइनस टू, और जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस टू। तो सब सही था ईमान, बस एक एस माइनस वन जो है ना, मेरे ख्याल से तुम इसे ऊपर लेकर आकर प्लस करवा दिया, बस ये एक छोटी सी मिस्टेक है, बाकी सही है। जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री माइनस टू, यस। तो इट्स जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। ये हमारे पास बेस यूनिट आ गए रेजिस्टेंस के। कूल। सही है। तो छोटा सा ही सवाल था, कंप्लीट हुआ। मैं तो कहूँगा फ्री के मार्क्स से इस सवाल ने हमें 10% मार्क्स दिए हैं यार। 60 मार्क्स का पेपर होता है और ये 6 मार्क्स, मेरे ख्याल से तो मुफ्त के मार्क्स थे। इजंट इट अमेजिंग। ऐसा पेपर वन हम पे मेहरबान नहीं होगा, पेपर टू होता है इस तरह मेहरबान। 10% पेपर करवा दिया इसमें। Cool. तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। परफेक्ट। ओके अमतुल, ठीक है क्या? ओके। हाँ हमजा, सही, चलो। लेट्स सी, कोई एक और मजीद सवाल मिल जाए जो हम कर लें। वी हैव 6 मिनट्स। मई जून 2015 P21। क्वेश्चन वन। ओके, use the definition of power to show the SI base unit of power are this। चलो, वहां पे वर्क के बारे में बात की थी, यहाँ पे पावर। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है एफ इंटू डी, टाइम ऐसे ही रहा। ये जी एम एस माइनस टू, डिस्टेंस हो गया एम, टाइम हो गया एस। तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, और ये एस ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, यानी ये जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। ये हमारे पास एसआई बेस यूनिट आ गए पावर के। जी एम स्क्वायर एस, ठीक है ईमान, अच्छी आपने ब्रेक डाउन करके वर्किंग दिखाई है स्टेप वाइज। बस वो एक ही मुझे जहां तक फील हो रहा है ना, तो मैं पावर को नीचे से ऊपर लेके जाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। क्योंकि देखो, एस माइनस टू ऑलरेडी है, ये ऊपर आएगा तो एस माइनस वन होगा। ठीक है, बाकी स्टेप वाइज वर्किंग इज परफेक्ट। ए जी एम एच को एस माइनस यस। और एक तरीके से ये भी देख सकते हो, वी हैव टू प्रूव ना, दैट इज हाउ वी कैन क्रॉस चेक। और मे बी दिस इज अ टाइपो एरर। ओके,
use an expression for electrical power to determine SI base unit of potential difference. पावर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. Okay, if you remember, one of the formula for power in O levels we had was power equals to IV. तो I एम्पेयर बेस यूनिट है, वो वोल्टेज P अपॉन I हो जाएगा, यानी G एम स्क्वायर S माइनस 3 ओवर 8 kg एम स्क्वायर S माइनस 3 A माइनस 1. Once again I am telling you, ये जो सीक्वेंस है कि पहले आपने एम्पेयर लिख दिया फिर केजी लिख दिया, इट्स बेसिकली अप टू यू until or unless your answer is correct. Examiner does not mind कि आप पहले केजी लिखें, पहले मीटर लिखें, पहले सेकंड लिखें, ठीक है. पावर्स सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. And always write your answer to the designated area. M square S minus 3 A minus 1. That is our final answer for voltage. Done? Just watch it. Voltage. PGM square S minus 3 A minus 1. Yes, यही है, ठीक है. कूल. तो दिस इज इट बेटा. हमारे पास जो डिस्कशन था अबाउट द बेस यूनिट्स, दैट डिस्कशन वी कवर्ड, आई मीन मोर देन इनफ. अब व्हाट आई बिलीव, हमें अगली क्लास में नया टॉपिक विच इज अनसर्टेनिटीज शुरू कर देना चाहिए. एंड इंशाल्लाह बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास आई विल बी पोस्टिंग the homework for the section 1.1 and 1.2. And if you have not joined the Google Classroom, आप अपने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में गूगल ज्वाइन के लिंक को हासिल कर सकते हैं और वहां से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. यस मदी. सर अभी तक आपने टोटल टॉपिक्स कितने कवर करवा दिए हैं? पहले चैप्टर का पहला सेक्शन हुआ है बस, और ये उसी के पास पेपर्स हम करे चले आ रहे हैं बिकॉज द अकरेंस ऑफ दैट टॉपिक इज वेरी हाई. बाकी एक और सेक्शन था, वो ना होने के बराबर था, उसमें कुछ याद नहीं करना होता, बस उसमें समझाना कुछ नहीं होता, सिर्फ याद करना होता है. तो बस वो हुआ है, रीजनेबल एस्टिमेट्स ओके वाला. सर, ठीक है सर. सो कोई बात है, कोई सवाल है, यू कैन आस्क, देन वी कैन कंक्लूड द क्लास. नो क्वेश्चन सर. परफेक्ट. तो दिस इज इट बेटा. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अच्छा अमतुल, हम A2 का बैच जो है ना, मेरी बात हुई थी सर सलमान से, हम इंशाल्लाह फ्रॉम सितंबर शुरू कर रहे हैं, ठीक है. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Okay, sir. अल्लाह हाफिज. सर एक सवाल है. हाँ बोलो. मैं अक्टूबर नवंबर में निकाल सकता हूँ फिजिक्स को क्या? इज इट पॉसिबल? बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, अच्छा, तो फिर क्या थोड़ा ख्याल है कि टाइम मैं दो. मई जून में कंप्यूटर दे दूँ? हाँ मई जून में ही फॉलो करो, थोड़ा टाइम दो, कंप्यूटर, बिकॉज ये बेहतर रहेगा. तो मैं कंप्यूटर निकाल सकता हूँ मई जून में क्या? मई जून में क्या निकाल सकते हैं? कंपोजिट लाइक दोनों एक साथ, A2 एक्सेलरेटेड. और नो नो नो, वेल बहुत जल्दी A2 हो और A जाएगा. दो. नहीं अच्छा, नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा. देखो, सही. टाइम के साथ साथ आपका माइंड मेच्योर होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना जल्दी में टाइम भी जाया होगा, पैसा भी जाया होगा, जी ठीक है. जी, ओके सही बेटा, है सर. ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।